afternoon, all. Good afternoon. Good afternoon. Chalo, we'll start in 2 minutes. Chalo, we'll start in 2 minutes. Chalo, we'll start in 2 minutes. Let us start in 1 or 2 minutes. Let us start in 1 or 2 minutes. Let us start in 1 or 2 minutes. चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एंड दिस इज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स सारे सब्जेक्ट्स रेडी है सब लोग? आर यू रेडी? कमेंट करो रे। अजय कुमार, आनंद भगत, गेम चेंजर। मैं तो करता हूँ कंटिन्यू, लेकिन यू पीपल डोंट कम रेगुलरली ना। देखो अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं सर, एंड आई विल नॉट वेस्ट टाइम। चलो स्टार्ट करते। दैट इज माय प्रॉब्लम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके सर, ओके सर। रेडी? देखते हैं सर कितने क्वेश्चंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस है। डुया 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 मशीन डिजाइन, मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स, ब्रेक इवन एनालिसिस, सारे बहुत सारे क्वेश्चन सर। फटाफट फटाफट। सॉम, देन बकलिंग लोड, ओके, सिंप्लेक्स मेथड, ओ माय गॉड, बैलेंसिंग, टॉम, नो झंझट, फटाफट। बहुत सारे क्वेश्चंस करना है सर, एंड दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलो रेडी है? बैलेंसिंग, टॉम, फटाफट। बहुत सारे क्वेश्चंस करना है सर, एंड दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलो रेडी है? स्टार्ट करें? ओके, व्हेन इज योर एग्जामिनेशन सर? व्हेन इज योर एग्जामिनेशन? एस गेस गेट के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ट्रू। 16th ना? 16th ना? चलो अभी अभी बिना वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करेंगे। लंच भी नहीं किया आज, बिकॉज इमीडिएटली क्लास हो गया तो आ गए। मेरा एप्टीट्यूड का क्लास अभी खत्म हुआ थोड़ी देर पहले। स्टार्ट करें? यस। तो वेर एवर अ बिट ऑफ थ्योरी, थोड़ा बहुत थ्योरी देते हुए आई डू क्वेश्चन सर। गिविंग सम थ्योरी आई सॉल्व क्वेश्चंस। विल इट बी ओके? एडमिट कार्ड में फोटो और साइन है तो ही नहीं है सर। एडमिट कार्ड में फोटो और साइन ही नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या है फिर? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सो प्लीज नोट डाउन दैट। एक बात, क्वेश्चंस आर नॉट इन ऑर्डर का मतलब ओनली वन सब्जेक्ट नहीं। एग्जाम में कैसा आता वैसा दिया सर। द वे द क्वेश्चंस कम इन एग्जामिनेशन, मिक्स, सारे मिक्स होके वैसे ही दिया। चलो, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एनटीयू in a heat exchanger is, what is NTU? It is the term used in the design of heat exchanger. When are you using NTU effectiveness method? Bolo sirs, when are you using NTU effective method? When exit temperatures are not known. दोबारा बता रहा हूं सर, कुछ थ्योरी देते हुए बता रहा हूं। So when exit temperatures are not known,
exit temperature of cold fluid, exit temperature of hot fluid. When exit temperatures are not known, you go for NTU effectiveness method. So when are you using LMTD method? When the inlet temperatures and outlet temperatures, when all the temperatures are known, then what is that you are finding in NTU? LMTD में area, we design the size of the heat exchanger. Hope it is clear. So now NTU is equal to UA by C minimum. So this is the equation. तो ये भी पूछ सकता, when is NTU effectiveness method used? It is used when the outlet temperatures are unknown. Is it clear, sir? Yes. Okay, ये A is the answer. चलो next. हाँ, a gas having a negative Joule-Thomson coefficient. Okay, when throttled. देखो, let us take Joule-Thomson coefficient का है sir. Look at what is Joule-Thomson coefficient. It is the variation of temperature with respect to pressure under throttling or isenthalpic conditions. This is the Joule-Thomson coefficient, correct sir? And you know, for an ideal gas, Joule-Thomson coefficient is 0. I'm giving you theory. Okay, बहुत बढ़िया sir. This is ideal gas के लिए Joule-Thomson coefficient is 0. No problem at all. Now, but the question ये नहीं पूछा sir. Question में ये नहीं पूछा. देखो, if I plot, it will be something like this. Very good sir. And you know, here the slope is 0. Okay sir. Now, everywhere on this curve, enthalpy is constant. Now, look at carefully. This curve can be divided into two regions. One is positive slope, the other is negative slope. Here the slope is positive because when the temperature is increasing, the pressure is also increasing, or when the pressure is decreasing, temperature is also decreasing. So here, and what is the slope of temperature pressure of isenthalpic curve? Joule-Thomson coefficient. So can I say here mu is positive and here mu is negative? Yes sir, बिल्कुल सही है sir. तो he is asking about this when mu is negative. वो mu negative पूछा है sir. यहाँ पे mu negative है. बहुत बढ़िया. And everyone knows throttling is an irreversible process. Whenever throttling occurs due to friction and you know the pressure drops, throttling हमेशा will occur in the direction of decrease of pressure. ठीक है sir. Now he is asking in which region is he asking when mu is negative. देखो अगर ये initial state है मेरे प्यारे दोस्तों, this is the initial temperature. Very good. And if throttling is occurring, will it occur in the rightward direction or leftward direction? Just now I told you, throttling always occurs in the direction of decrease of pressure. तो अगर initial pressure ये है, the final pressure will be less than this. It will be somewhere here. So therefore, this is the final pressure. Now you tell me what is happening to the, when you are in the negative slope region, जब नेगेटिव स्लोप रीजन में जब थ्रॉटलिंग हो रहा है तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द फ्लूइड विल बिकम वार्मर, सो देयरफॉर इट बिकम्स वार्मर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर. दिस इज इट बिकम्स वार्मर. एंड वन मोर थिंग, इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, देखो इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल किस रीजन में यूज करते हैं सर? एक्चुअली when throttling is taking place, the temperature should decrease. Vapor compression refrigeration में हमें low temperatures चाहिए, so it should cool. So you will operate in mu positive region. So hope this question is clear, sir. क्या ये question सभी को समझ में आई सर? Everyone, is the question clear? Let's not waste time, sir. चलो ये हो गया. तो answer is it becomes firmer. Okay, right. Next. A 6 mm thick sheet is rolled with 200 mm diameter rolls. So you tell me the diameter of the rolls is 200 mm. So what will be the radius? So if the diameter is 200 mm, the radius will be 100 mm. बहुत बढ़िया sir. To reduce the thickness without any change in the width. Width is not changing, only thickness is reducing. And the thickness is reducing means length is increasing. The flow of material is along the length. So width is not changing. ठीक है sir.
And the coefficient of friction is, how much is the coefficient of friction, sir? The coefficient of friction is given as 0.2, sir. What is the minimum possible thickness that can be produced in a single pass? तो मिनिमम थिकनेस कितना प्रोड्यूस होगा? बहुत बढ़िया सर, इधर देखो, आप शायद जाने होंगे, पहला क्वेश्चन एचएमटी का था, दूसरा क्वेश्चन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा प्रोडक्शन. सो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल एरियाज. इज इट ओके सर? यस. अब देखो, आई थिंक यू might have studied. सो अगर आपको मैक्सिमम रिडक्शन चाहिए तो अभी आवर इक्वेशन इज म्यू स्क्वायर इंटू आर. व्हेन आई टॉट यू मेटल फॉर्मिंग, ये इक्वेशन डिराइव किया सर, ये इक्वेशन डिराइव किया. इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर सर? यस, यस, यस. नाउ देखिए, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर minus final, sorry, initial thickness minus final thickness is mu square r. Mu square is 0.2 square and the radius is 200. But please note down that अगर ये mm में है, if this is in mm, this should also be in mm. So what is the initial thickness given, sir? The initial thickness, somewhere it is given, 6 mm is initial thickness and the final thickness I don't know. तो ये कितना होगा सर? Radius is 100. I'm really sorry sir. Mu square r, mu square r, mu square r, radius is 100. तो ये कितना होगा सर? 0.04. तो 0.04 into 100 is 4. So therefore T2 will be equal to 6 minus 4, that is equal to 2 mm. Is this clear sir? Is this clear sir? गलत है ये? इज इट गलत? अरे यार, रूट डेल्टा एच इज रूट डेल्टा एच बाय, इज इट करेक्ट? अरे यार, रूट डेल्टा एच इज रूट डेल्टा एच बाय, इज इट करेक्ट? सही है या गलत है? बोलो. या नेक्स्ट, ये करो. At the point of boundary layer separation, at the point of boundary layer क्या हुआ? करेक्ट है ना? क्या नेट नहीं आ रहा? तो लैग हुआ? कहीं पे लैग हुआ? लैग हुआ? नहीं लैग हुआ? अरे यार, नहीं आ रहा है. सो इट सीम्स देयर इज अ प्रॉब्लम. एक सेकंड में चेक करते. एक सेकंड, आई एम चेकिंग, आई एम चेकिंग, आई एम चेकिंग. लैग हुआ सर? ऑल गुड, नो प्रॉब्लम ना? शैल आई कंटिन्यू? शैल आई कंटिन्यू? क्या हुआ? नेट का प्रॉब्लम चल रहा है. सो इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना? प्रॉब्लम हो रहा है? ऑल क्लियर? पता नहीं मेरे नेट में क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रहा है सर? सो कैन यू हियर मी? पता नहीं यार, एक बार मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ. आई एम चेकिंग सर, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? कुछ गड़बड़ चल रहा है. अभी क्लियर है? इज एवरीथिंग फाइन? या. So I'll give you some theory and I'll proceed. At point of separation, what is the shear stress? मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखना सर. You know very well, अब आप देखते जाना. You know very well. तो अगर ऐसा है, if this is the case, and in this case du by dy at y is equal to 0, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो there is no separation. Suppose you have something like this. तो अगर du by dy at y is equal to 0, अगर ये 0 है, and the third is, देखो कुछ ऐसा, तो यहां पे प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, ऑलरेडी du by dy at y is equal to 0, अगर नेगेटिव, ये ऑलरेडी सेपरेटेड, ये ऑलरेडी सेपरेटेड. सो ये सेपरेटेड.
दिस इज अबाउट टू सेपरेट, मतलब ये ऐसा है सर, एक्चुअली द डायग्राम इज लाइक, इधर देखो सर, it is about to separate. So this is known as separation point, it is known as separation point. ध्यान से सुनो. So at the separation point the velocity gradient is zero, so it is known as attached flow, it is known as a detached flow, it is about to get separated and इसको बोलते हैं separation point. And we know that tau is equal to mu du by dy. So what will be the shear stress at the wall? Mu. And at the separation point, देखो, at the separation point du by dy is zero, तो shear stress is zero. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर. आज देखिए, शायद आप देखे होंगे, सुनो सुनो ऑल ऑफ यू. पहला क्वेश्चन किस पे था? हीट ट्रांसफर. दूसरा क्वेश्चन किस पे था? थर्मोडायनेमिक्स. तीसरा किस पे था? प्रोडक्शन. फोर्थ किस पे था? फ्लूइड. तो मैं ऐसा सेलेक्ट किया सर, आपको फायदा हो. मैं तो कोशिश कर रहा हूं सर. अब इज इट क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, फटाफट आंसर बोलो. बोलो. देखो, टूथपेस्ट ट्यूब, इट इज एक्सट्रूजन. 4. पाइप्स, पाइप्स तो कास्टिंग होगा, सो इट इज 4-1. 4-1, हाँ जी. एंड प्लास्टिक बॉटल्स, इट इज ब्लो मोल्डिंग. C2. एंड थ्रेडेड बोल्ट्स, रोलिंग. यस, द आंसर इज C. इज इट करेक्ट सर? अरे यार, आप क्वेश्चन नंबर देखकर, मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखकर आंसर दे रहा. यू राइट क्वेश्चन नंबर एंड आंसर सर. मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, या पहले का दिए या बाद का दिए. ठीक है, चलो आज रिकॉर्ड करेंगे सर. शुड आई गो अ बिट फास्ट? मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलू सर, थोड़ा फायदा होगा आपको. थोड़ा फास्ट जाऊं? वेरी गुड. अब देखेंगे. ए 15 सेंटीमीटर डायमीटर shaft turns 900 rpm in a journal bearing and the length is 20 centimeter. The load on the bearing is 3 into 10 power 4 Newton. This is the load on the bearing. The bearing pressure will be. I have taught very clearly in machine design. The bearing pressure is given by W by L into D. याद है? So for example, इधर देखो सर, इधर देखो. दिस इज द शाफ्ट. तो क्या करेंगे? अगर लोड W है तो प्रोजेक्टेड एरिया ले लो. सो अगर प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे, दिस इज लेंथ L. एंड अगर इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा सर? इफ आई प्रोजेक्ट दिस, दिस विल बी द डायमीटर, ये D होगा, and this will be the length L होगा. So this is the area. On this the load is acting. So what will be this? W by this is length L and D. तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार प्रेशर के यूनिट्स देखना, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन. तो लोड इज 3 into 10 power 4. इसका मतलब क्या? 1 2 3 4. Okay, so many Newton. And LD should be taken in centimeter, centimeter, centimeter square. Okay, so LD, what is the length sir? 20 centimeter. And the diameter is 15 centimeter. तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर. कुछ हो सकता है सर? हाँ, कोशिश करेंगे. ये जीरो गया. 3 ones 3 5s. हाँ जी सर. 5 2s 10. 5 into 2 is 10. 10 मतलब एक जीरो गया. So it is 100 Newton per. Don't use calculators. Please do not use calculators sir. क्या B ऑप्शन सही है सर? प्यारे बच्चों, B ऑप्शन सही है. बहुत मस्त. वेरी गुड. बहुत मस्त. थोड़ा फास्ट जाएंगे सर. डगा 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 बोलो सब लोग. डगा 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 फास्ट चलो. हाँ. A car traveling at a speed of 60 kilometer per hour. So what is the velocity? 60. Kilometer means 1000. मैं अकेला कैलकुलेटर यूज करता हूं सर, आप लोग मत यूज कीजिए. मैं अकेला यूज करता हूं. यू शुड नॉट यूज. ओके सर. ओके. नाउ 60 किलोमीटर आवर इज 3600. तो ये दो गए सर. तो V इज इक्वल टू 600 बाई 36. 6 वंस, या फिर 12 से निकल जाएगा सर. ये 12 से आराम से निकल जाएगा सर. हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे सर. V इज इक्वल टू 600 बाई 36. 12 3s 12 50. तो द वेलोसिटी इज 50 by 3.
Is it correct, sir? So what is the unit, sir? What is the unit, sir? हे भगवान, मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकंड. नाउ is breaked to come to rest in 6 seconds. ध्यान से सुनो, in how much time it is coming to rest? So if the initial velocity with which the car is moving, initially its velocity is 50 by 3 meter per second. ठीक है सर. And what is the final velocity, sir? 0, because it is coming to rest. क्या ये सबको समझ में आया सर? मेरे प्यारे बंधुओं, क्या ये सभी को समझ में आया? समझ में आया सर? यस सर. And let me find out acceleration. V is equal to U plus AT. बहुत बढ़िया सर. So what is the velocity? 0. What is the initial velocity? 50 by 3 plus acceleration, and the time is 6. So correct now? Is it correct, sir? Yes. Now you may be wondering, sir, acceleration find out करके क्या करने वाले हैं? Because he is asking the frictional force. मैं बताऊंगा सर. क्या ये क्लियर है सर? बहुत बढ़िया सर. तो 50 by 3 is equal to minus 6a. तो acceleration will be equal to 50 by 3 into 6. तो क्या होगा सर? 2 3s 225. तो acceleration is equal to minus 25 by 9. Is it correct or wrong, sir? क्या ये acceleration सही है या गलत है सर? बोलो एक बार. 2 3s 225. Is the acceleration correct? सर कुछ तो बोलो सर. कुछ नहीं बोल रहे सर. Is the acceleration value correct? What does negative sign show? It is decelerating. When the velocity is decreasing and it is coming to rest, it is deceleration. Just take the magnitude. And you know very well, देखो, the acceleration is equal to कितना है सर? 25 by 9. Am I right? 25 by 9. Okay, so many minutes. तो आप देखो सर, एक कार जा रहा है, जो भी है. हाँ जी सर. Very good. Now, this weight is, its weight is mg. What is the reaction, sir? The normal reaction is R. So can I write R is equal to mg? Yes, sir. So what is the frictional force? अगर ऐसा जा रहा है, the frictional force will be what? Frictional force will be mu into R. So what is the frictional force, sir? Frictional force is mu into R is mg. नहीं आ रहा है समझ में? क्या ये बात समझ में आया सर? So what is the net force acting? The net force is frictional force. इस पे net force क्या कर रहा है सर? Frictional force. Net force is equal to mass into acceleration, Newton's second law. So net force ma, the only force acting is the frictional force, that is mu mg. नहीं आ रहा है सर, m कट गया. तो acceleration is mu into g. तो he is asking, क्या पूछा है सर? What is asked? The friction between this. तो friction mu will be equal to a by g. तो a का वैल्यू कितना है सर? 25 by 9. And g value is, let us take it as 10. तो आंसर आ रहा है 25 by 90. इज इट करेक्ट सर? 25 by 90. तो आंसर कितना आ रहा है सर? 25 by 90. गलत है सर? कुछ गलत किया? एक बार कैलकुलेटर लिखे देखो. 25 by 90. यस, 0.28. वेरी गुड सर. ये आ रहा है, इट शुड बी 9 3 27. गलत है सर? 0.277 आ रहा है. तो विच वन? बिकॉज वी हैव टेकन g as 10. अगर g 9.81 कम लेते वैल्यू और बढ़ेगा. तो विच वन इज क्लोज आंसर सर? 0.283. इज इट करेक्ट? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? प्यारे बच्चों, समझ में आया? ए कैसा होता रे ऑप्शन? ए कैसा होता सर ऑप्शन? कौन है रे ए बोलने वाले? अरे यार, दुकान बंद करूं मैं? आई एम प्लानिंग टू स्टॉप. मैं बंद कर रहा हूं सर. शाले बंद दी दुकान. अरे फिर ये समझ में आया सर क्वेश्चन? देखो, नेट फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है. वेट इज mg. फ्रिक्शनल फोर्स इज mg into r. mu mg. mu into r is mg. That is nothing but net force. What is net force? Mass into acceleration. क्या है क्वेश्चन समझ में आया सर सभी को? Have you understood the question? If the question is clear, I'll proceed. लेखराज, बहुत दिन के बाद आ गए लेखराज. वेरी गुड. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट. A beaker filled with hot water in a room cools from
70 to 25 in T1 minutes, 70 to 65 in T1 minutes, 65 to 60 in T2 minutes, and 60 to 55. ध्यान से सुनो, every time there is a reduction of 5 degree, 5 degree, 5 degree. Okay, now is it a steady state heat transfer or unsteady state heat transfer, sir? अरे यार, the temperature is changing with time, so it is unsteady heat transfer. And you know very well, I have given very clearly, अगर आप यहाँ पे time, अगर या आप यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं, वी हैव स्टडीड इन लंप्ड एनालिसिस, याद है सर, अनस्टेडी स्टेट इन लंप्ड एनालिसिस, हाउ इज द टेम्परेचर वेरिंग विद टाइम? एक्सपोनेंशियल. If the temperature is increasing, exponential increase. If the temperature is decreasing, exponential decrease. देखो ये कर्व होगा सर, ठीक है. Now initially the temperature is, मान लो देखो 70 डिग्री, एंड 70 से कितना ड्रॉप हुआ सर? देखो दिस इज 65, एंड 65 से अगेन दिस इज, देखो एक बार 60, एंड 60 से द ड्रॉप इज सेम ड्रॉप. देखो ड्रॉप का मतलब ये वर्टिकल लेंथ, देखो ड्रॉप 70 मैंने 65 5, 65 मैंने 65, ये 555 होना चाहिए. एंड दिस इज गिवन एज T1, ये वाला, and this is given as T2, and you know this is given as T3. What is your observation, sir? What is your observation? बताइए sir, what is your observation? And obviously T1 is less than T2, less than T3. T3 will be more, sir. T3 will be more. Is it correct, sir? क्या ये समझ में आया सर? What is the reason for this? आप बताइए सर, इसका वजह क्या हो सकता है? I'll explain the reason. So exponential curve. So I think option C is correct ना? Let me tell you the reason for this. The reason for this is, देखो एक बार, initially the system is at 70 degrees centigrade, and let us say surroundings are at 20 degrees centigrade. What is the difference, sir? The difference is large. Whenever the gradient is large, अगर पानी का पाइप का स्लोप ज्यादा है, फास्ट फ्लो होता है. When the difference is large, it takes lesser time to transfer. Similarly, now उसके बाद 65 है. Now surrounding is 20. What is the difference, sir? देखो 70 minus 20 is, the difference is 50. जब gradient ज्यादा है, fast heat transfer. Now what is the gradient, sir? देखो एक बार, ये कितना आ रहा है सर? 45 is the difference. तो इसके comparison में temperature difference कम हो गया, तो gradient is less, it will take more time. Now the third is, ध्यान से सुनो, third is 60. 60 से अब this is how much? Therefore delta T is 40. So our gradient कम होगा, so it will take more time. T3 will be more compared to T2. This is T2 and this is T3 and this is T1. So have you understood the question, sir? Please बताइए sir जी. So the same question can also be asked in other way. In an unsteady lumped heat flow analysis, the temperature time variation is A sinusoidal, B exponential, C linear, ऐसा कुछ बोलेगा, C parabolic. It is exponential. Is it clear, sir? Very good. बहुत बढ़िया. ये वाला ले लो. In order to get uniform thickness of plate by rolling process, one should provide what? Sir, can we take mechanical engineering optional or anthropology will be best? देखो, let me tell you very clearly, ये बात यहाँ पे 2 मिनट ले रहा हूँ सर. Recently, this year, one of my students, Vikas, he got IAS, proper IAS मिला सर. He is from Bihar. तो he has taken mechanical engineering as optional. तो मैकेनिकल से पॉसिबल है, लेकिन मैकेनिकल से बहुत मेहनत करना पड़ेगा. तो आप कॉल कर सकते हैं सर. आई विल गिव माय नंबर, यू कैन, बट बिफोर कॉलिंग आप मैसेज कीजिए. आई विल गिव यू टाइम, आई विल गाइड यू, डेफिनेटली आई विल गाइड यू. ठीक है सर? ओके, मिस्टर प्रदीप दास. ठीक है, चलो अब देखो सर. नाउ क्या बोला है सर? एक्चुअली क्या होता है ना, रोल्स दे डिफॉर्म अंडर द लोड. इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है सर. तो जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनो, रोल है, ये है अंडर द लोड. अगर इलास्टिक डिफॉर्म होता है तो ये ऐसा होता है सर, ये ऐसा होता है. देखो अंडर द लोड, जस्ट मैं बता रहा हूं. तो बीच में क्या होगा सर? बीच में कुछ थिकनेस ज्यादा होगा. सो टू अवॉइड दैट, व्हाट वी डू इज,
रोल्स को क्या करते हैं, केम्बर देते हैं। केम्बर का मतलब रोल्स को ऐसा बनाते हैं ताकि अंडर अंडर देखो, वी मेक रोल्स लाइक दिस एंड दिस इज नोन एज केम्बरिंग। तो ऐसा अगर देते हैं तो अंडर द लोड ये डिफॉर्म होगा, अंडर द लोड ये डिफॉर्म है, यूनिफॉर्म थिकनेस मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म थिकनेस, एंड दैट इज नोन एज providing camber on rolls. Why cambering is provided on rolls? To get uniform thickness of sheets or plates. तो therefore this is the right answer. कुछ ऑब्जर्व किए होंगे सर, आप कुछ ऑब्जर्व किए होंगे, क्या ऑब्जर्व किए, अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे सर, ताकि प्रॉपर रिवीजन हो जाए। शैल आई कंटिन्यू द दुकान? देखो इसको क्या बोलते हैं सर, शैल आई कंटिन्यू? लेखराज मजा मजा मजा, ये ले लो। The shape factor of a plane surface about itself. The shape factor about itself. Whenever it is about itself, it is known as self view factor. This we call it as FII or F11. देखो, there is a plane surface. There is a plane surface. And this plane surface is, let the surface be one. It is emitting. It is emitting. It is emitting. It is emitting. What is the fraction of this radiation emitted falling on itself? ये plane surface है sir. What is the fraction emitted and falling? चलो एक किताब ले लो, ये वाला ले लो. Plane है. What is the fraction leaving and falling? 0, 0, 0, 0, 0. So therefore, F11 emitted by 1 and falling on 1, it will be 0. And one more thing, let us take convex surface. Convex surface, तो ये ऊपर वाला, बाहर वाला, so ऊपर वाला, बाहर वाला. तो what is the shape factor of convex surface? देखो ये पूरा completely it is going out. So again for this F11 is 0. But what about concave surface? इधर देखो, अगर हम concave की बात कर रहे हैं, if I am talking about concave, yes, whatever it is emitting, it is falling on itself. तो इसमें F11 is not 0. For flat surfaces and convex surfaces, the shape self view factor is 0. Is it clear, my dear students? Is it okay? Don't worry, Sumant. आप प्लीज डोंट वरी, आप देते जाना, काम करते जाना, बहुत बढ़िया, ये करो, ले लो। Please, please, let's not waste time, sir. Consider the following with respect to linear program. A linear programming problem with 3 variables cannot be solved by graphical method. क्या graphical method से 3 वेरिएबल कर सकते हैं सर? अगर 2 वेरिएबल है x y, अगर x1 x2, if there are 2 variables you can easily solve, correct or not sir? अगर 2 वेरिएबल है you can easily solve by using graphical. So then we have to go for simplex method if the number of variables are more. देखो, which of the, consider the following statement, which of the given statements are correct? A linear programming problem with 3 variables, how can I put the third variable? How can I put the third variable? सर इन एवरी टाइम, इसीलिए मैं इंडस्ट्रियल को इंपॉर्टेंस दिया सर जी, इसीलिए मैं इंडस्ट्रियल को इंपॉर्टेंस दिया। देखो, ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद 3 वेरिएबल्स एंड 2 कांस्टेंट्स कैन नॉट बी सॉल्व, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इज द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों? इज द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों? यस, absolutely correct, because 3 variables को हम नहीं कर सकते सर। if you can solve by graphical method with any number of variables, why there is a need to introduce simplex method? नहीं, very good. In begin method, when the artificial variable leaves the basis, that देखो artificial variable जब जाता है तो मतलब when it is leaving that complete column, क्योंकि artificial variable है, if that is leaving you can eliminate, you can delete that complete column. ये बहुत सारे एग्जाम में आ रहा है सर, ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। इन बिगेम मेथड when the artificial variable is leaving the basis, the column can be deleted. So when, for example, यहां पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है, देखो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है, इफ दैट इज लीविंग द बेसिस, तो यू कैन कंप्लीटली डिलीट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। when one constraint line becomes parallel to the objective line, LPP will be degenerate ऐसा नहीं होता है सर। इधर देखो, ध्यान से सुनो, he said एक कंस्ट्रेंट अगर
ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पैरेलल होता है एक कंस्टेंट. दिस इज नॉट द केस ऑफ डिजेनरेसी. डिजेनरेसी इज नथिंग बट, ध्यान से सुनो सर, दिस इज द केस ऑफ डिजेनरेसी. ध्यान से सुनो. यस, or this is the case of degeneracy. Means in degeneracy all the resources will be utilized and one of the variables will be zero. One of the variables will be zero. इसमें देखो, अगर ये x1 है x2 है, इसमें one of the variables is zero, इसमें x2 zero है. So this is the case of degeneracy. जब parallel होता है वो degenerate नहीं होता है सर. Is it clear? So therefore the third statement, when become parallel, it will have degenerate. ये गलत है sir. So 1 and 2 are correct. Anyone got the answer sir? Clear? So therefore the third statement, okay, चलो ये करो. Come on, let's not waste time. Let's not waste time. If the radius of current carrying wire is less than critical radius, then the addition of insulation will enable the wire to carry higher current. This is because, ध्यान से सुनो, let me give you, यहां से दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं. I request everyone, पहले मैं कुछ थ्योरी दूंगा, उसके बाद will proceed sir. This is the radius and this is the क्या बोलते हैं heat carrying capacity. So actually you will have a graph of this. ठीक है sir. Now this is the point where the current here, sorry, the heat is transferred is maximum, and corresponding radius where the heat transfer is maximum, we call it as critical radius of insulation. Now ध्यान से सुनो sir. वो cylinder है, the it is K by H. अगर ये सिलेंडर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो HR by K is equal to 1. This is for cylinders. And अगर वो sphere है, HR by K is equal to 2. This is for spheres. And one more thing, please note down that मैं क्लास में beautifully बताया, there is no concept of critical thickness of insulation in case of plain slabs, because in plain slabs as you are एरिया तो सेम रहेगा. जब आप इंसुलेशन थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं, so convective area is not changing, so therefore there is no change in the convective resistance. But as the thickness is increasing, conductive resistance is increasing, so total resistance is increasing, the heat transfer will continuously decrease. But unlike that, अगर आप spheres और cylinders देखेंगे, जब radius बढ़ा रहे हैं, so conductive resistance is increasing because of the increase of thickness, but at the same time outer area is increasing, more area is available for the heat transfer, so convective heat transfer बढ़ने के कारण the resistance is decreasing. So therefore the total resistance may increase or decrease depending on the thickness of insulation. That's why we use the concept of critical radius of insulation in case of cylinders and spheres. So ये होगा this radius we call it as critical radius. अब वो क्या बोल रहा है, अब सवाल देखो एक बार. Now my dear students, please understand the question properly. Suppose this is the radius of the wire or pipe. ये radius है. तो what is this radius? This radius is less than critical radius. तो अगर एक मान लो critical thickness is let us say some 20 mm. Just imagine. And this radius, let us say it is 5 mm. So this radius is 5 mm. Now on this, if I provide insulation, what will happen? तो अगर आप insulation provide कर रहे हैं, let us say 2 mm thickness का insulation provide किए, 2 mm, तो what will be the radius? Now the radius will be 7. तो ये insulation है. So whenever the radius is less than critical radius, if I provide now it is 20, तो ये मान लो 7 है, तो क्या हुआ सर? So heat transfer बढ़ गया सर, heat transfer बढ़ गया. Whenever the radius is less than critical radius, addition of insulation will increase the heat transfer. Whenever the radius is more than critical radius, addition of insulation will reduce the heat transfer. ये जो concept है ना, ये वाला region, we use this in electrical wires, because in electrical wires when the current is flowing due to Joule heating, the temperature will increase. तो अगर तो heat नहीं transfer होता है effectively, the wire may melt. इसीलिए we provide insulation so that it transfers more heat and thereby the current carrying capacity will increase. तो क्या logic है सर? Whenever the radius is less than critical radius, addition of insulation will improve the heat transfer, because as it increases heat transfer, it will carry more current. क्या ये concept? और ये कहाँ पे use करेंगे सर? Right side, steam pipes में.
Because when you are adding insulation, if the radius is more than critical radius, when you add insulation, heat transfer decreases. Because when the steam is flowing, the purpose is to reduce the heat transfer, so that अगर heat transfer ज्यादा होता है तो the steam may condense. क्या ये logic आया सर सभी को? बोलो सर, कुछ तो बोलो, बताइए सर. Is the concept clear? बहुत बढ़िया सर. तो what is the answer सर? अब बताइए. Now you tell me what is the answer sir? If the radius is less than critical radius, the addition of insulation will enable the wire to carry higher current, because the thermal resistance is reduced. देखो, heat loss, क्या बोले, heat loss from the wire is reduced, heat loss from the wire is increased. Definitely, as the heat loss is increased, बोलो समझ में आया सर? देखो, heat loss from the wire is increased. समझ में नहीं आ रहा सर? अगर heat loss reduce होगा तो problem, अरे यार, समझ में आया सर ये क्वेश्चन? क्लियर? यस. हीट लॉस बढ़ रहा है, क्लियर? यस. ये देखो, which of the following are zero dimensional defects? You know, point defects, line defects, surface defects. बताओ सर. Dislocations are nothing but line defects, surface line defects. Okay, बहुत बढ़िया सर. Vacancy is a point defect. Point defect is nothing but, देखो एक बार इधर देखो सर. देखो यहाँ पे वेकेंसी है, मींस इट इज कन्फाइंड टू अ पॉइंट, देयरफॉर इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट का मतलब जीरो डायमेंशनल. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब दिस इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कुछ है या नहीं है, दिस इज नथिंग बट अगेन इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट और जीरो डायमेंशनल. सब्स्टिट्यूशन, अगर इस जगह पे और कुछ सब्स्टिट्यूट होके आ रहा है, वो भी इस इट इज कन्फाइंड टू अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट ओनली. सो दीज थ्री आर जीरो डायमेंशनल और पॉइंट डिफेक्ट्स. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? कुछ तो बोलो सर. वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. सर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है सर? दुकान बंद करे. चलो मैं बंद कर रहा हूं सर. यू आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. Thermal resistance of a 0.5 meter thick, 1 meter width is 1 meter, and 1.25 meter height, having a thermal conductivity of 0.4. एक बार स्लैब देखो सर, एक बार स्लैब देखो. ये स्लैब है सर. What is height given, sir? The height is 1.25. And what is the width given, sir? 1 meter. Okay, no problem. And what is this thickness given, sir? Anyone? ये thickness कितना दिया, sir? Thickness कितना दिया? 0.5 meter. And the thermal conductivity is given as 0.4. And he is asking the thermal resistance. Thermal resistance. Anyone? Anyone? What is thermal? Thermal conductive resistance. इधर देखो. For a plain slab, the conductive resistance is given by the thermal conductor L by Ka, where L is thickness of the slab. What is the thickness? 0.5. And K, what is K? K is given as 0.4, sir. K is 0.4 into area. ध्यान से सुनो, जब कंडक्शन हो रहा है तो इस एरिया से हो रहा है सर, इस एरिया से हीट ऐसा बाहर जा रहा है. सो कंडक्शन एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. तो व्हाट इज दिस एरिया सर? व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज 1 and this is 1.25. So area will be 1 into 1.25. 1 into 1.25. Is it correct? Yes. तो कितना आएगा सर? नो कैलकुलेटर्स प्लीज. तो ये तो 5/4 आएगा सर, ये तो 5/4 आएगा, और ये 100/125 आएगा सर. सो क्या होगा सर? 5 ones 525, 5 ones 525, correct. 25 into 4, I think you are getting 1. Is it correct sir? Is it correct sir? 525, 5 ones 525,
और एक बात है सर, सपोज वो कंडक्टिव रेजिस्टेंस, मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, let this radius be r1, let this radius be r2, let this temperature be maintained at t1, let this temperature be maintained at t2, let t1 be greater than t2, so radially the heat is transferred. So what is the heat transfer, sir? The heat transfer is given by 2 pi kl into t1 minus t2 by ln r2 by r1. किसी को याद है सर? ये किसी को याद है सर? दिस इज फॉर सिलिंडर्स। एंड इसमें क्या होगा सर? इसमें क्या होगा सर? Q फॉर प्लेन स्लैब, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, इसीलिए ये हो गया सर। चलो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम स्पीयर ले रहे हैं सर, इफ आई टेक स्पीयर, let this be r1, let the temperature be t1, let this be r2, let the temperature be t2. What is the heat transfer, sir? 4 pi k r1 r2 into t1 minus t2 by r2 minus r1, याद रख लेना सर ये। तो यहां से he may be asking, this is for sphere, this is for sphere, he may be asking conductive resistance, याद रखना delta t is equal to q into r। देखो यहां पे क्या होगा, so what will be delta t sir? यहां पे delta t, this is delta t, ये पोर्शन इज डेल्टा टी। व्हाट विल बी डेल्टा टी? इट इज क्यू इंटू, ये इधर आएगा, डेल्टा टी इज क्यू इंटू इधर आएगा एल एन आर टू बाई आर वन बाई टू पाई के एल। सो दिस इज नथिंग बट डेल्टा टी इज क्यू इंटू आर, एंड दिस इज नथिंग बट माय डियर स्टूडेंट्स, it is the conductive resistance for cylinders. It is the conductive resistance for cylinders. He may be asking, sir, दो तीन बार पूछा है सर, is it okay? Is it okay सर? हाँ जी सर। अब इधर आइए सर, कम हियर, कम हियर। डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये टी1 इज क्यू इंटू आर टू माइनस आर वन बाई 4 पाई के आर वन आर टू। तो क्या बोलेंगे सर? डेल्टा टी इज क्यू इंटू आर, एंड दिस इज योर, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द कंडक्टिव रेजिस्टेंस फॉर स्पीयर्स, याद रख लेना। So पूछ सकता सर, there is a possibility, there is a possibility. And one more thing, what is the unit of resistance, conductive or convective और जो भी है, what is the unit of resistance सर? मैं बताता हूँ सर, इधर देखो, you know delta t is equal to q into r and r is equal to delta t by q. पूछ सकता सर, this delta t, whenever it is a temperature difference, you can write either centigrade or what, टेम्परेचर डिफरेंस सेंटीग्रेड भी हो सकता वॉट, एंड हीट ट्रांसफर इज ऑलवेज इन वॉट, देयरफॉर, अरे मैं पागल हो गया सर, whenever it is temperature difference, it may be degree centigrade or Kelvin, degree centigrade or Kelvin temperature difference, and heat transfer will be in what? So the unit of thermal resistance is, it may be conductive resistance, convective resistance, जो भी है, it will be equal to centigrade per Kelvin, sorry, per watt or Kelvin per watt. Is it clear sir? And similarly, what is the convective resistance? HA delta T. So this can be written as delta T is equal to Q into 1 by HA. So delta T is Q into R, and this is known as convective resistance. So पूरा कंप्लीट किया सर, कोई बात नहीं। होप यू अंडरस्टूड सर, सबको समझ में आया सर? ये क्वेश्चन आ सकता सर यहाँ पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वन क्वेश्चन, व्हाट इज द logarithmic mean area in logarithmic mean area in cylinders? So it can be written as a2 minus a1 by ln a2 by a1, याद रख लेना ये, समझ में आया सर? व्हाट इज a2? a2 is 2 pi r2l, a1 is 2 pi r1l. Is it clear sir? Yes or no? Yes or no my dear students? Yes or no? It is the logarithmic mean area. अगर वो geometric mean area in sphere पूछता है सर, geometric mean area in spheres, and this can be written as under root of a1 into a2, and you know in case of spheres कहां से heat transfer होता है सर? surface area. So therefore a1 will be equal to 4 pi r1 square and a2 will be equal to 4 pi r2 square. दोबारा बता रहा हूं सर, इधर देखो, अगर ये स्पीयर है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्पीयर है,
तो अब देखो अगर एक लेयर है तो सरफेस एरिया से दूसरे लेयर पे जाएगा सर, बट वही सिलेंडर है तो 2πr along the length। समझ में आया ना सभी को? And one more thing, what is the temperature distribution in case of plain slabs? Constant thermal conductivity, no heat generation, linear. What is the temperature distribution in cylinders? Logarithmic. What is the temperature distribution in spheres? It is hyperbolic. And one more thing, आपको तीन चीजें याद रखना है सर, इधर देखो, क्योंकि ये सब काम में आएगा सर, पूरा हीट ट्रांसफर कंडक्शन इसी पे होता है सर। This is for generalized equation for in Cartesian coordinate system. For cylinders, 1 by r, dou by dou r of r dou t by dou r। एक बार ये सवाल भी पूछा है सर, this is for cylinders, then 1 by r square dou by dou r of r square dou t by dou r plus q generation by k is 1 by alpha dou t by dou t। This is for spheres। याद रहेगा सर? Will you remember this? Very good sir, पूरा कंप्लीट हो गया सर। So let's move to the next question. तो shall I move? थोड़ा टाइम दे रहा हूं सर एब्जॉर्ब करने के लिए। To absorb, I am giving you some time. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। नाउ लेट्स नॉट स्टॉप, अब हम रुकेंगे नहीं। ओह माय गॉड, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। बोले रे बाबा, बाबा बोलो, बोले रे बाबा, बाबा बोलो। कैसा हो रहा है? मजा मजा। लेखराज, डॉक्टर लेखराज बोलो उसको। हाँ। In the product, in the production of a product, the fixed cost is 6,000 and the variable cost is 10 per product। Okay, if the sales product is 12 rupees, then the break even quantity or volume, ध्यान से सुनो, you know my dear students, at break even total cost is equal to total revenue। This total cost consists of fixed cost plus variable cost। Very good। But यहाँ पे ध्यान से सुनो, the variable cost is given for one piece। The variable cost is given for one piece। So let us produce Q quantity। तो एक यूनिट के लिए 10 रुपए है, तो Q के लिए कितना होगा सर मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया Q इंटू V शुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एक को मान लो एस रुपए, जितना प्रोड्यूस किया उतना सेल कर रहे हैं सर, देयर इज नो इन्वेंटरी स्टोरेज। तो हाउ मेनी क्वांटिटी यू आर सेलिंग? क्यू। एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? यस, दोबारा बता रहा हूं सर। So if you produce Q quantities and Q quantity is sold at this is the income that you are generating, that you are getting, and this is the variable cost because Q is the quantity produced, V per unit, एक यूनिट को V है तो Q को QV, this is the total variable cost, this is the total fixed cost, so total cost should be equal to this। Now he is asking Q, तो क्या करेंगे सर मेरे प्यारे बच्चों? This can be written as Q into S minus V, इसको उधर ले जाना, Q into S minus V, और Q is equal to F by S minus V। The fixed cost is given as 6,000, perfect, and the selling price is 12 and the variable cost is 10 and this is कितना आ रहा है सर? दो मतलब 3,000। If you produce 3,000 quantity, so ये भी सवाल पूछ सकता सर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, he can also ask one question, how much quantity must be produced to earn profit? It should be greater than 3,000। So whenever you are producing more than break even, then you will be in profit। Is it clear sir? देखो इसका थोड़ा ग्राफ भी बताता हूं, इधर देखो सर,
क्वांटिटी, यहां पे कॉस्ट, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट सर, एंड दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट सर, बहुत बढ़िया। तो इफ आई दिस इज द, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हटा देंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ जी सर, एंड दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी सर। नाउ तो इफ आई ऐड बोथ कॉस्ट, तो ये स्ट्रेट अवे स्लोप तो चेंज नहीं होगा, ये स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा सर, बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों, इट विल बी समथिंग लाइक दिस सर, दिस इज द टोटल कॉस्ट, अरे यार, दिस इज द टोटल कॉस्ट, मतलब इतना खर्चा हुआ आपको, तो दिस इज माई फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। व्हाट इसका स्लोप क्या शो कर रहा है सर, एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस शोइंग, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट शो कर रहा है। अगर मान लो, अगर सेलिंग प्राइस का स्लोप इससे कम होता है, इससे अगर स्लोप कम होता है, क्या कभी प्रॉफिट में आएंगे सर, कभी प्रॉफिट में नहीं आएंगे। सो देयरफॉर टू अर्न प्रॉफिट्स द स्लोप शुड बी ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट, इसका स्लोप, सो देयरफॉर ये होगा सर, इसका इससे ये स्लोप ज्यादा होना चाहिए। ऑल दिस आई हैड एक्सप्लेन वेरी क्लियरली, एंड दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, और दिस इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस रेवेन्यू। तो व्हेनेवर यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन दिस, इससे ज्यादा, तो डेफिनेटली माय टोटल कॉस्ट इज लेस, माय सेलिंग कॉस्ट इज मोर, इतना प्रॉफिट मिल गया सर। अगर ये प्रॉफिट जोन शो कर रहा है, अगर क्यू से कम है, तो ये क्या होगा सर, ये देखो, ये टोटल कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सो टोटल कॉस्ट से सेलिंग कम है, दिस इज शोइंग लॉस, दिस इज लॉस, दिस इज प्रॉफिट, एंड दिस इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज ब्रेक इवन क्वांटिटी। इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? Sir, how can we tackle UPSC, CSE and ESC interview? Because they ask very complex question. ऐसा नहीं होता है सर। तो पहले ही आप डर गए तो कैसा, नॉलेज गेन करो। Whenever you are going for UPSC interviews, like you should know one thing, कि आपका कैरेक्टर एक दिन में चेंज नहीं होगा, तो इट इज बिल्ट ओवर ईयर्स, एंड वेर एवर यू गो, बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यू शुड मेक ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे क्या है, ये कौन सा मटेरियल है, ये कैसा वर्क कर रहा है, ये सब सोचना पड़ेगा सर, सडनली बुकिश नॉलेज से नहीं होता है सर, ये लिख के रख लेना, ठीक है, वेरी गुड, ये करो। A single bay car wash with a poison arrival rate and exponential service time has cars arriving at an average rate of 10 per minute. Okay, 10 मिनट में एक कार आ रहा है सर, दिस इज अराइवल। तो एक घंटे में कितने आएंगे सर, मल्टीप्लाई विथ 6, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 into 10 minute is 6 into 1, ठीक है सर। व्हाट इज 60 मिनट, 1 आवर, इन 1 आवर 6 कार्स आर कमिंग, दिस इज अराइवल रेट, अराइवल रेट, ठीक है सर। इज इट ओके, इज इट ओके सर, अराइवल रेट इज 6 per hour, एंड देखो, एंड द सर्विस रेट इज 4 मिनट, मतलब एक कार को सर्विस करने में 4 मिनट लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो फॉर 1 कार इट इज 4 मिनट, तो 60 मिनट में कितने कार सर्विस करेंगे सर आप, 60 मिनट में 1 कार इज सर्विस फॉर 4 मिनट्स, तो 60 मिनट में कितना करेंगे सर, 60 मिनट मींस 1 आवर, तो 1 आवर 1 आवर 1 आवर, तो इट विल बी 60/4, इट इज 15 per hour, एक्सलेंट सर, excellent sir, is it okay मेरे प्यारे दोस्तों, beautiful sir, and he is asking what is the traffic utilization, lambda by mu, इसको हम lambda लिखेंगे, this is the arrival rate and this is the service rate, this is service rate, and what is the utilization sir, traffic utilization, the traffic utilization is lambda by mu, lambda is 6, mu is 15, तो कितना आएगा सर ये, 3 2 3 5, I think you are getting this as 0.4. What is the physical meaning of 0.4 sir, what is the physical meaning of this, the physical meaning is
you will be busy for 40% of the time and 60% of the time you are free. That is the meaning here. That is known as traffic utilization rate. ये सवाल भी आ सकता है रे बाबा. मजा मजा. क्या बच्चे हैं रे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ एंजॉय करो. समझ में आया सर क्वेश्चन? दुकान चलाऊं या बंद करूं? दुकान चलाऊं या बंद करूं? अभी मैं खाना नहीं खाया सर. टुडे आई हैव नॉट टेकन लंच. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर करो, देखते हैं सर. क्या मजा आ रहा है सर. हीट ट्रांसफर, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. वाह. Which of the following statements is true? At critical point, all the three phases of water exist. Is the first statement true? So it's not the critical point, sir. It's not the critical point. It is the triple point where all the three phases coexist. So first statement is galat. Critical point, the saturated liquid and saturated vapor are identical. Is the B statement correct? Is the B statement correct? Yes, sir. If you see, maybe TS diagram, देखो, अब थोड़ा देखेंगे सर. This is the critical point, and this is the saturated liquid curve, and this is the saturated vapor curve. This is saturated liquid, saturated vapor. So at this point both become identical. So at the critical point it is not possible for you to distinguish between liquid and vapor. They are identical. So at critical point liquid and vapor, देखो, liquid is coming from this side, vapor is coming from this side, and they are identical. So therefore this is correct. At triple point all the phases coexist in non-equilibrium. Why the third statement is wrong? ट्रिपल पॉइंट पे तो सारे थ्री फेसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग? वो तो सही बोल रहा है सर. एट ट्रिपल पॉइंट ऑल द थ्री फेसेस आर देयर. व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग? व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द रीजन इज at critical triple point all the three phases exist in equilibrium, but that fellow says non-equilibrium. ये non शब्द is galat. They exist in equilibrium. At triple point liquid and vapor are identical. No, 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 no. At triple point all the three are identical. All the three they exist. तो ये भी गलत है. वो बोल रहा है only liquid. No, it is at the critical point. It is at the critical point they are equal. Is the 17th question clear, sir? Correct. ये करो. Oh my God, for the first time सॉम का क्वेश्चन आया रे बाबा. सॉम का क्वेश्चन आया रे बाबा. The normal stress on two perpendicular planes through a point in a stressed material. देखो देखो, 80 is tensile, 20 is tensile. Look at carefully. मजा आ गया रे, अब मजा आ गया रे. This is sigma x. This is sigma y because he gave tensile. How much is sigma x, sir? 80. You can take this also 80. It doesn't matter. 20 because he has not specified. And a shear stress is also acting on these planes. How much is this? 40. अगर ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे होगा. And this is trying to turn in the anti-clockwise direction. So this has to be in the clockwise direction. Is the representation correct? Is the representation correct? Yes, sir. पूछा क्या सर? Maximum shear stress. How can I find out maximum shear stress, sir? मैं बचपन में पढ़ा था. The maximum shear stress is given by major principal stress, minor principal stress by 2. ये पढ़ा था सर मैं. But what is sigma 1? Sigma x plus sigma y by 2.
plus under root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau xy का whole square. And what is sigma 2 sir? Sigma x plus sigma y by 2. तो ये minus under root of sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy. तो यहां से निकालो सर. So if I subtract, ये तो कट जाएगा, ये प्लस आएगा, तो सेम है तो 2 टाइम्स आएगा. अगर 2 इधर आएगा, so this will be. So maximum shear stress is also equal to radius of Mohr circle. The maximum shear stress is also equal to radius of Mohr circle. So ये सब जरूरी नहीं, आपको समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए I have given sir, just for understanding, because I know you people are very smart. Just we are revising the subject, therefore I am giving all these things. ठीक है सर जी. तो maximum shear stress, so tau max will be equal to radius of Mohr circle. It is sigma x minus sigma y by 2 का whole square plus tau xy square. So therefore tau max is equal to under root of sigma x. What is sigma x sir? 80. And what is sigma y sir? Sigma y is 20 na? 20. Okay. By 2 whole square. And the shear stress is 40 square. तो कितना आ रहा है सर maximum shear stress? Do we need calculator? 60 by 80 minus 20 is 60. 60 by 2 is 30. 30 square plus 40 square. I think you are getting root of 50 square. So you should get 50 megapascal. Is 50 correct? Is 50 correct, sir? Very good students of India. Mechanics का आ गया सर. Anyone? You give question number and answer, sir. You give question number and answer, sir. You give question number and answer, sir. So a truss can take only axial load. A truss can, in truss there is no bending, there is no shear, only axial load, sir. Truss can take only axial load. Correct? Yes, sir. Come on. Please give the question number and answer. देखो, which of the following is incorrect about heat transfer question? It is a function of, ध्यान से सुनो सर, unlike thermal conductivity, heat transfer coefficient is not property. It depends on fluid properties, viscosity of the fluid, density of the fluid, and with what velocity it is flowing, then surface conditions, then geometry, inclination, ये सारों पे depend, and even on the temperature. So देखो, it is a function of fluid properties. बिल्कुल this statement is correct. It is a function of system geometry. Yes, it is correct. What do you mean by system geometry? Is it oriented, inclined, or kept like this, kept like this? Orientation पे भी depend करता है. Means geometry बिल्कुल depend करता है. It is a function of temperature difference. Yes, 100% it's a function of temperature difference. It is constant. It is 100% wrong statement, and he is asking incorrect only. He is asking wrong statement only. This is the wrong statement. It is not constant. That's why we take average heat transfer quotient, because it varies with temperature conditions, it varies with fluid properties. समझ में आया सर ये क्वेश्चन? ये भी अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत अच्छा है सर. I am so happy that most of the students are listening to the class with enthusiasm. Thank you all of you. इस बार गेट के लिए कुछ धमाका प्लान किया सर यूट्यूब पे. डोंट वरी. ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ स्पेसिमेन यूजिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग, द पैरामीटर एक्चुअली मेजर्ड इंक्लूड. एक्चुअली किसको मेजर करते हैं सर आप टेंसाइल टेस्टिंग में? लेकिन आप प्यार से कमेंट्स लीव करो सर. लाइक इफ द क्लास इज गुड, दैट मोटिवेट्स अस. अगर अच्छा लग रहा है तो बोलो कि क्लास अच्छा हुआ, दिस थिंग्स.
अगर बुरा लग रहा है तो क्लियरली बोलो बेकार क्लास है, कमेंट करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, ड्यूरिंग टेंस व्हाट इज दैट यू फाइंड आउट, सो आई कैन फाइंड, मतलब हम क्या एक्चुअली मेजर करते हैं सर, लोड, इलोंगेशन। एक्सटेंसोमीटर से हम इलोंगेशन मेजर करते हैं और लोड मेजर करते हैं सर, लोड एंड इलोंगेशन। फ्रॉम लोड इलोंगेशन यू डेवलप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यू डिराइव अदर प्रॉपर्टीज। मतलब याद रखना, पहले लोड इलोंगेशन, लोड इलोंगेशन से वी कन्वर्ट इनटू स्ट्रेस स्ट्रेन, फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन रेजिलियंस, टफनेस, यंग्स मॉड्यूलस, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, ये सब कैलकुलेट करेंगे सर। सो ड्यूरिंग टेस्ट द पैरामीटर्स दैट आर मेजर्ड, वी मेजर लोड एंड इलोंगेशन, वहां से सारे चीज आ जाएंगे सर। इज इट क्लियर? थैंक यू बेटा, थैंक यू। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट, ये करो देखते हैं सर, ये करो देखते हैं। देखो, if the modulus of elasticity is, why is the rigidity modulus, what is the Poisson's ratio? मेरे प्यारे दोस्तों, I studied something like this. Is this correct? Where nu is the Poisson's ratio, some textbook give it as mu. क्या ये सही है सर? Is this correct sir? हाँ जी sir. Now what is E? This E is given as 2G. E is given as 2G, is 2G into 1 plus nu. तो ये कट गया सर, 1 is equal to 1 plus nu. So nu is equal to 0. किसके लिए nu 0 होता है सर? गेस मारो. Any material which has 0 Poisson's ratio? किसके लिए होता है ये बताओ? Cork. Wonderful. Cork is correct. That's why it is used in sealing bottles. What is the maximum value of Poisson's ratio, sir? What is the maximum value of Poisson's ratio, sir? What is the maximum value of Poisson's ratio? 0.5 is correct. 0.5. किसके लिए होता है 0.5? Rubber. Is it correct? Rubber. He may also ask one question. What is the क्या बोलते हैं? What is the value of Poisson's ratio for incompressible material? For incompressible material, you know very well. देखो ये सवाल भी आ सकता है सर. देखो, the volumetric strain is given by, मैं भूल गया सर, एक बार फिर भी चेक करो आप. बहुत दिन हुआ सॉम पढ़ा के. क्या ये सही है? If a member is subjected to triaxial loading, this is sigma x, sigma y, sigma z. Is it correct, sir? Is this correct, sir? This is actually showing volumetric strain. Change in volume to the original volume is sigma x plus sigma y plus sigma z by E into 1 minus 2 nu. ध्यान से सुनो, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है change in volume is zero. When will the change in volume be zero? E cannot be infinite because E, you have all deformable bodies. You cannot have a rigid body. So therefore E cannot be infinite. तो जीरो होने के चांसेस दो है सर. केस वन, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये जीरो हो सकता है. या फिर सेकंड इज 1 minus 2 nu is equal to 0. It means nu is equal to half. It means 0.1. Whenever nu is 0.1, it is incompressible. It means volume change is zero. This can also be one of the possibilities. तो सिंपल सर, हाउ कैन दिस बी जीरो? बहुत सिंपल है सर. अगर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल कंप्रेसिव है, फॉर एग्जांपल सिग्मा एक्स इज 60
एंड सिग्मा वाई इज 30 एंड सिग्मा जेड मान लो कंप्रेसिव है 90। बताओ सर, सिग्मा एक्स इज 60, सिग्मा वाई इज 30, सिग्मा जेड इज -90, समेशन इज 0, तब ये इनकंप्रेसिबल। ऐसा सवाल भी आ सकता है। होप यू आर रेडी फॉर दैट। बहुत बढ़िया सर, ये करो। कम ऑन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। If TO is the optimistic time, TP is pessimistic time, and TM is most likely time, the probabilistic time for the completion, most expected time. Expected time क्या होगा सर? Probability. मैं क्लास में बताया था, क्यों एक एक का वेटेड एवरेज लेके बताया था सर। इट इज ऑप्टिमिस्टिक प्लस पेसिमिस्टिक प्लस 4 times मोस्ट लाइकली बाई 6। मैं आपको क्लास में रीजन के साथ बताया था। कैसा बताया? 3 सिग्मा, इधर साइड 3 सिग्मा, इधर साइड 3 सिग्मा, 3 + 3 6। तो 6 के लिए क्या होगा सर? तो 6 के लिए वेटेड एवरेज है सर ये 1/6 ऑफ टी नॉट, 4/6 ऑफ टीएम एंड 1/6 ऑफ टीपी। तो हम ये वेटेड एवरेज डिराइव्ड इन क्लास में, अपने रेगुलर क्लास में क्लियरली बताया था सर ये। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस सर? इज इट डी ऑप्टिमिस्टिक? यस, करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following can be used to determine the variation of saturation pressure with temperature in phase boundary? आपको बताया था dp by dt is equal to, हाँ जी सर, dp by dt मैं भूल गया सर, it is sg minus sf by vg minus vf. This can also be written as dp by dt is equal to, what is sg minus sf? It is latent heat पर बाई टाइम। करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज वीजी माइनस वी एफ। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं सर? याद है किसी को? What is this equation known as? It is Clausius-Clapeyron equation, and this is used for finding out the enthalpy of vaporization. And here the pressure temperature, the slope of pressure temperature diagram is given by this. याद रख लो ये, ठीक है सर? ये वाला voice is not audible. Is voice not audible? Voice is not audible. Is voice not audible? वेरी लो आ रहा है, पता नहीं यार, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट किया, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बिल्कुल कर रहा हूं सर, कर रहा हूं। गुड ना? थोड़ा प्लीज, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, तो अपने साइड से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ सर प्लीज। ठीक है, चलो। ए शिप एंटर्स रिवर फ्रॉम सी due to due to the dissolution of salts, the density of sea water will be more. जब सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है तो बॉयंसी फोर्स ज्यादा होगा। फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा है तो वो उठाएगा सर, क्योंकि फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा उठाएगा। अगर वही रिवर में जाएगा तो रिवर का डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर इज लेस। जब रिवर वाटर लेस है तो क्या होगा सर? द शिप विल सिंक अ लिटिल, बिकॉज डेंसिटी कम है। तो बायंसी फोर्स इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड g into volume of fluid displaced. तो buoyancy force which is the upward thrust, it is dependent on the fluid density. सी वाटर में फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होने के कारण द सी इट विल पुश द शिप अपवर्ड्स। बट वही शिप अगर रिवर में जाता है तो रिवर वाटर का डेंसिटी कम होगा। जब डेंसिटी कम होगा, बॉयंसी फोर्स कम होगा, वो सिंक होगा। व्हाट इज द आंसर सर? व्हाट इज द आंसर? इट सिंक्स अ लिटिल बिट। इज इट ओके सर? सचिन तेंदुलकर लो वॉइस, मेरे इसमें तो अच्छा आ रहा है सर। पता नहीं यार, ये अचानक ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? इज वॉइस ओके? बहुत ही लो है, एडजस्टेबल है सर? ऑल ओके यार, ऑल ओके। लेखराज, ऑल ओके। अजय बोला सब ठीक है। किरण कुमार ओके।
तो प्लीज मेरे साइड से आपको गुजारिश है, अपना डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा लो सर। अब मेरे में शायद क्या प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। ये करो। द buckling load will be maximum for a column। किसमें मैक्सिमम रहेगा सर? आई थिंक if both ends are hinged, क्या है सर? When both ends are hinged, this is pi square ei by l square। am I right? बिल्कुल सर। if both ends are fixed, आप जानते हैं सर, this is 4 pi square ei by l square। सबसे मैक्सिमम बकलिंग लोड विल बी फॉर बोथ एंड्स फिक्स्ड के। जब बोथ एंड फिक्स होता है सबके लिए मैक्सिमम है। इज इट क्लियर सर? क्लियर सर? ये समझ में आया सबको? सर हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन सर? सो और एक के लिए, वन एंड फिक्स्ड, द अदर एंड फ्री, इसके लिए क्या होगा सर? इट विल बी पाई स्क्वायर ई आई बाई 2l होगा, 4l स्क्वायर होगा सर इसके लिए। और वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड पिन्ड, इसके लिए क्या होगा सर? आई थिंक इसके लिए कुछ ऐसा होगा। ठीक है सर। सो इट विल बी l by root 2। आई थिंक 2 pi square ei by l square, ऐसा कुछ होगा। करेक्ट ना? सो मैं भूल गया सर, इज इट करेक्ट? शुड बी करेक्ट? यस। सबसे मैक्सिमम तो इसके लिए आ रहा है सर, बोथ एंड फिक्स के लिए आएगा सर। ही इज आस्किंग सबके लिए मैक्सिमम है। इज इट क्लियर? ओके सर। हाँ, ये ले लो। गुड क्वेश्चन। कम ऑन लेट्स कंप्लीट। The simplex method for solving linear programming uses, ध्यान से सुनो। सिंप्लेक्स मेथड में फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कुछ फीजिबल रीजन आया सर। इमेजिन दिस द फीजिबल रीजन। ओके, तो आपको सॉल्यूशन कहां से मिलेगा सर? देखो, ऑल द पॉइंट्स इन द फिजिबल रीजन नहीं, ये तो ओके, सॉल्यूशन कहां से मिलेगा सर? सर दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर HPCL JE सर, मैकेनिकल बोथ ना? यस सर जी, बिल्कुल सर जी। एंड प्लीज नोट डाउन दैट आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन यहां, 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 यहां। सो कॉर्नर पॉइंट्स विल गिव यू द सॉल्यूशन। सो ओनली कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द feasible solution। यस, एग्जैक्टली, कॉर्नर पॉइंट्स, नॉट इंटीरियर, ओनली कॉर्नर पॉइंट्स गिव द सॉल्यूशन। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर। इज इट ओके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अरे इंडस्ट्रियल के भी क्वेश्चन कर रहे हैं सर आप। हाँ, ये करो। ये गवर्नर क्या है सर? whenever this is minus b, जब इंटरसेप्ट माइनस आ रहा है, दिस विल बी स्टेबल गवर्नर। दिस विल बी स्टेबल गवर्नर। समझ गए सर? whenever you get माइनस, लेकिन अगर ये आ रहा है ए आर प्लस बी, इट इज अनस्टेबल। ऑल दिस आई हैव टोल्ड यू इन क्लास। ये माइनस आता है इंटरसेप्ट, अगर प्लस इंटरसेप्ट आता है, प्लस आता है, तो इट विल बी अनस्टेबल। दिस इज अनस्टेबल। अगर ये माइनस आ रहा है तो इट विल बी स्टेबल। सो इज इट क्लियर सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। ये करो फटाफट फटाफट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मैं खाना भी नहीं खाया सर आज। सीरियसली आई हैव नॉट टेकन फूड। सुबह HMT का क्लास हुआ, उसके बाद एप्टीट्यूड का क्लास हुआ, अब HPCL का। हाँ, ये करो, देखते हैं सर हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। देखते हैं सर। अच्छा क्वेश्चन है सर। टू पैरेलल shafts whose axes are separated by 75 mm, घेर दिया है सर। ओके, this is one axis of the shaft, this is another axis, both are parallel, and the central distance is given as कितना दिया सर? 75 mm। Okay, and they are connected by spur gears। Okay,
so that the output shaft rotates 50% of the speed of input. Let us say this is input shaft. Let me take it as 1. Let this be the output shaft. Let me take it as n. अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. ठीक है सर. तो मुझे पता है सर, the pitch point, this is the pitch point, so the velocity is same because it is instantaneous center of velocity. So v is velocity is same, so v is r omega r1. This radius is r1 and this radius is r2. So this radius is r1, this is r2. So r1 plus r2 is given as 75 mm. बहुत बढ़िया सर. And you know at the pitch point the velocity is same, velocity is r omega. तो अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, तो r1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 ओमेगा 2. He has given that the output shaft rotates at 50% of the input shaft. So what is the output shaft speed? It is 50%, आधा है. Can I write this as correct, sir? The output shaft is rotating at half the 50% of this. बिल्कुल सही सर. So r1 omega 1 is equal to r2 omega 2. What is omega 2? Omega 1 by 2. So omega 1 is gone. So r2 is equal to 2r1. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पुट करो r1 plus r2. What is r2? 2r1. So 2r1 is equal to 75. So 3r1 is equal to 75. So r1 is equal to 25. And what will be r2, sir? What will be r2? 2r1. R2 is 2 times R1 is 25. So therefore, R2 will be equal to 50 mm. So 25 and 50 is the correct answer. What is the answer, sir? 25 and 50. So option is. Question था sir. कुछ तो बोलो sir. हे भगवंता, नमो नारायण पार्वती, हर हर महादेव, शंभो शंकरा. मेरे बच्चों को क्या हो रहा है? मजा आ रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर. मतलब लगातार कंटिन्यूअसली बच्चे हैं. वाह. ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं रे. सर डाया बोला है. एक सेकंड. एक सेकंड. Two circles are separated by distance of 175 mm. हाँ. सही बोले आप. आंसर नहीं 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 नहीं. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. वेरी गुड. बहुत मतलब गलत किए सर. गलत किए सर. हम गलत किए सर. ट्रू. ही आस्क्ड डायमीटर्स. कौन उठाए रहे पॉइंट? आई बो माई हेड. देखो एक छोटा मिस्टेक से जिंदगी तबाह हो जाएगा. मैं सोचा रेडियस पूछा है, मैं क्वेश्चन की तरफ देखा ही नहीं. पागल 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 पागल. So he asked diameter. So what will be diameter of one? बहुत who identified sir? नितिन. थैंक यू बेटा. नितिन. ये होता है सब. मेरे बच्चे मेरे से तेज है. So diameter is 100 mm. No. R2 is 100 mm and R1 is 50 mm. बहुत बढ़िया सर. वाह. गलत है रे बाबा. बहुत सही किया सर जो भी किए. नितिन आज का मैन ऑफ द मैच. नितिन यू आर मैन ऑफ द मैच. गॉड ब्लेस यू बेटा. तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस? इफ यू आर नॉट कॉशियस, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है सर. ये करो. The Reynolds number is 4000. It is a pipe or cube. If the diameter is increased by 25%, initial Reynolds number, the diameter is increased by 25%. Can I write this, sir? And the velocity is decreased by 20%. 20% घट गया, 20% डिक्रीज हुआ, तो कितना बचा है सर?
Is it correct, sir? Is it correct, sir? Yes. So RE1 is equal to rho 1 d1 rho vd by mu, and that is 4000. यहाँ पे एक बात सोचने की है सर, आर यू चेंजिंग फ्लूइड? देखो एक बार, same fluid is said. So if the fluid is same, fluid properties will remain same. So therefore rho mu change नहीं होगा. Therefore rho और mu change नहीं होगा sir. Why rho mu change नहीं होगा? Because the fluid is not changing, only other properties are changing. So what is the Reynolds number in second case? Rho v2 d2 by mu2. But mu2 rho 2 mu2 is same as rho v. Properties are not changing. तो पुट करो सर, क्या करेंगे, ये वैल्यू कितना है? तो मैं ऐसा कर सकता हूं सर, इधर देखो, क्या करें, दोनों को डिवाइड करो सर, यू डिवाइड बोथ, RE2 by RE1 डिवाइड करो, RE2 by RE1, what is RE2? Rho v2 d2 by mu by RE1 rho v1 d1 by mu. तो रो बाय म्यू गया, तो RE2, what is RE1 sir? RE1 is 4000 and that should be equal to v2 d2. v2 is 0.8 v1 and d1 is 1.25 d1 divided by d2. v2 d2 by v1 d1. तो RE2 will be equal to, ये 4000 उधर जाएगा, it is 4000 into 0.8 into 1.25. कितना आ रहा है सर ये? Anyone, what is the value? कितना आ रहा है सर? What is 0.8 into 1.25? It is 5 by 4. It is 5 by 4. 5 by 4. It is 5 by 4 and it is 4 by 5. मतलब ये 1 आ रहा है, तो 4000 ही आएगा सर. Is it okay? 4000 ही आ रहा है, correct ना? Wonderful. In a kinematic chain, quaternary joint, this is the joint. Quaternary means how many joints? 2, 3, 4. This is quaternary joint. At a point when you have 4 links, it is quaternary joint. So it is equal to how many binary joints? देखो देखो, please listen, मेरे प्यारे बच्चों. This 2 is one binary joint. Binary means 2. This 2 is second binary joint. This 2 is one binary joint. So quaternary joint is equal to 3 binary joints, or a joint with a joint with n number of links has n minus 1 binary joints. So what is the answer, sir? 3. Come on, let's not waste time. The circumferential and longitudinal strains are given by this. The volume change, ध्यान से सुनिएगा sir. The volume of the cylinder is given by pi by 4 d square L. So you know very well, when we derived the volumetric strain, तो क्या लिखेंगे सर? It is twice, ये दो आएगा, twice the radial or diametral strain plus, ये already मैं derive किया था. If you want I can derive now. If you want I can derive now. If you want I can derive now. क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है सर. What is the change in differentiate करो इसको, differentiate करो. dv is equal to pi by 4 is constant, तो 2d dd, समझ गए ना, प्लस dl. अब दोनों साइड आप u डिवाइड विद pi by 4 d square l. सो बाय वॉल्यूम pi by 4 d square l. तो क्या होगा? pi by 4 जाएगा, d square जाएगा. तो समझ में आ रहा है सर? आई थिंक यू गेट दिस. ओके, गॉट इट सर. तो यू कैन इजीली डू दिस. तो 2 times diametral strain plus 1 times longitudinal. बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है सर? सिलिंड्रिकल बॉयलर, इंटरप्रेशर, एप्सिलॉन एप्सिलॉन रेस्पेक्टिवली. सर्कमफेरेंशियल का मतलब जो डायमीटर चेंज कर रहा है, दिस इज गिवन एज एप्सिलॉन 1,
and the longitudinal is given as epsilon 2. तो ये epsilon 2 दिया, तो आंसर क्या होगा? I think C is the right answer ना? Is C correct? Yes sir. ये करो. कैविटेशन में अकरेट दो टाइप्स ऑफ डिवाइसेस है सर. एक रिएक्शन टर्बाइन है, एक पंप है सर. इन पंप द फ्लूइड इज सक्ड, मतलब पंप में एंट्री पे ही एट टी ऑफ द इंपेलर when you are sucking the pressure will be very very low. So in the whenever the pressure is low, if it falls below vapor pressure, there is a chance of cavitation. So in case of pumps, it will occur at the inlet to the pump or eye of the impeller. And in turbines, high pressure reaction, in reaction turbines, the fluid enters at high pressures. Once it develops power, उसके बाद में pressure कम होते जाएगा. Exit of the runner, runner के exit, inlet to the draft tube, pressure कम होता है sir. So therefore runner exit पे reaction turbine में chance है sir. Where is that exit of reaction turbine? अगर वही pump बोलता है तो inlet of the pump. Is it clear? Very good. In order to have maximum power of Pilton wheel, the bucket speed or vane speed, ध्यान से सुनो, the bucket speed should be half of the jet speed. Then only the efficiency will be maximum. ये बहुत important question है सर. जो jet से fluid का velocity आ रहा है और ये bucket पे गिर रहा है, and this bucket speed should be half of this jet speed. Then only the bucket speed is equal to jet speed, equal to half of the jet speed. B is the right answer. है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैन डिराइव आल्सो. कैसे? ये बोलो. द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी. एनीवन व्हाट इज दिस? जब ग्रेविटी आता है तो इट विल बी फ्राउड नंबर. इनर्शिया टू विस्कस, अरे यार, इनर्शिया टू विस्कस, रेनॉल्ड नंबर. मैं डायरेक्टली ये सब नहीं लिखता हूं सर. इनर्शिया टू प्रेशर, यूलर नंबर. Inertia to surface tension, Weber number. Inertia to elastic force, it is the Mach number. तो Mach number में elastic force place, Weber number surface tension, Reynolds number viscous force, Euler number pressure force, Froude number gravity force. Inertia to gravity is Froude number. ये बहुत important है sir. There is a possibility. Make it fast. Make it fast. हो गया sir. Now just we'll close it. Don't worry. हाँ, देखो, the velocity equation is given by ui plus vj. तो यहाँ पे the first one is u. It is u sir. X plus 2y plus 2. And what is v? ui plus vj, 4 minus y. Let's see what is dou u by dou x plus dou v by dou y. And if this is equal to 0, it is the continuity equation for incompressible two-dimensional flow. This is valid for incompressible mass conservation equation. ठीक है सर. देखो dou u by dou x. What is dou u by dou x? What is dou u by dou x? 1. What is dou v by dou y? Minus 1. Yes, it is satisfying continuity equation. So the flow is incompressible. 100% compressible galat, incompressible. Now, rotational irritation. Omega z is equal to half of dou v by dou x minus dou u by dou y. This is the rotational component. So omega z is half of what is dou v by dou x? Dou v में कोई x नहीं है, 0. Dou u by dou y. U में y है sir. Dou u by dou y. Dou u by dou y is 2. And this is minus 1. What does minus 1 mean? Means omega is not 0. Whenever it is not 0, the flow is rotational component is there. The flow is rotational. The flow is incompressible and rotational. So therefore, the option D is the right answer. Is it okay, sir? बहुत बढ़िया. The COP of a refrigerator, COP of heat pump on a given, मुझे पता है sir. COP of heat pump is always equal to
COP of रेफ्रिजरेटर +1, क्या ये सही है सर? Should be correct ना? Should be correct ना? Correct ना? Yes. Next. A gas is expanded in a cylinder that its temperature remains constant. Actually, he should have given ideal gas. कोई बात नहीं सर. So whenever it is isothermal, what is the pressure volume variation? Anyone in the class? Actually, it is ideal gas. PV is MRT, mass is constant, R is constant, isothermal. Temperature is constant. So PV is constant. PV constant is rectangular hyperbola. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर. Rectangular hyperbola कहाँ है? Yes, hyperbola is the right answer. Is it okay? बहुत बढ़िया सर. As per one of the assumptions of linear programming, the objective function and constant, ध्यान से सुनो, we write z is equal to 3x1 plus 5x2. How this z and power of x linear, that's why we call it as linear programming. So therefore it is linear. समझ में आया सर? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर. हाँ, ये भी क्वेश्चन 40 है, ये भी क्वेश्चन 40 है. धोखा दिया सर. ये 40 है तो ये 41 होना चाहिए सर. अगर ये 40 है, देखो ये 39 है, ये 40 है तो ये 41 होना चाहिए सर. धोखा है ये. Which of the following is not a method to obtain initial basic? Least cost, yes, it is basic. It is a method used for basic reason. Big M method, nahi sir. Big M method, nahi. Vogel's approximation, yes. Northwest corner, yes. Least cost method or penalty method bolte hain. So therefore, answer is therefore this big M method is not used for developing. Is not used for developing initial basic feasible solution. अच्छा क्वेश्चन था सर ये भी. बहुत बढ़िया. ये in linear programming ये 42nd क्वेश्चन है. The dual price, duality क्या रिप्रेजेंट करता? यूनिट कॉस्ट. What does unit cost mean? अगर रिसोर्स का एक यूनिट प्राइस बढ़ाएंगे तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? तो ड्युअलिटी शो करता है. तो मैं क्लास में डिराइव करके भी बताया. ड्युअलिटी शो करता है सर. It is unit, it shows unit worth. So if the unit price of the resource is increased, what is the effect of that increase of unit quantity? तो वो ये शो करता है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना फर्क आएगा. So therefore unit price कहाँ गए रे? It shows duality shows the unit worth. Very good sir. ये क्या है सर? अभी कितने हैं सर? Last question. In a vapor compression refrigeration cycle, nth last question sir. Actually it is 43. Record कर दिए सर हम. मतलब 1.5 hours में 40 questions. एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया सर मैं आपका. मजा आ गया सर. मजा आ गया रे. मजा आ गया रे. Last question. हाँ. Inlet to the condenser. Which one is inlet to the condenser? I think this is inlet to the condenser. Inlet to the compressor, exit of the compressor or inlet to the condenser. Exit of the condenser or inlet to the throttle valve. Exit of throttle valve, inlet to the evaporator. Exit of evaporator or inlet to the compressor. बहुत बढ़िया. The exit of is given as 283. Exit at the inlet to the condenser. This is entry to the condenser. Exit of condenser, this one, this is exit. H3 is given as 116. Exit of evaporator. देखो देखो ये evaporator का inlet है, ये evaporator का exit है. तो H1 is given as 232. So what is the COP of the cycle? It is the refrigeration effect. Amount of heat absorbed, refrigeration effect. H1 minus H4 by work input. The input is taking place from 1 to 2. It is H2 minus H1. But already you know it is H4, sir. H4, it is throttling. So for throttling, enthalpy remains constant. 3 to 4 is throttling. So H3 is H4. मेरे प्यारे दोस्तों, H3 is H4. मेरे प्यारे दो, अरे
ठीक है. So H1, H4 can also be written as H3 because for throttling enthalpy remains constant. What is H1, sir? 232. And what is H3? 116. And what is H2? H2 283. And what is H1? Correct, no? What's the value, sir? What is the value, sir? कितना आना चाहिए? This should be 116. 283 minus 232. 51. I think it should be 2 point something. Is it correct? गलत है, sir? 2.27. Yes, A is the right answer. Should be A. Thank you, my dear students. Please do not forget to leave a comment. मैं आपको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए कभी नहीं बोला, नहीं बोलूंगा. So, but if you leave a comment, good or bad, I don't mind. तो इट मोटिवेट्स अस. मतलब अगर हमारे में कोई किया है तो इंप्रूव करेंगे, अच्छा है तो और अच्छा बेहतर करेंगे. बट वंस द सेशन इज ओवर, सेशन के बाद कमेंट्स लीव करना. ठीक है? कब है सर एग्जाम आपका? व्हेन इज दिस एग्जाम? व्हेन इज द एग्जाम? 16. हो सके तो और एक सेशन लाऊंगा इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, लेकिन कोई गारंटी नहीं है. ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू. ओके, थैंक यू. अच्छा लगा सेशन? बहुत अच्छा लगा सर जी, बहुत अच्छा लगा सर जी. चलो बाय बाय. ओके ओके. खुशियां नी, बंदा खुशों की नहीं. बोलो सब लोग. देखता हूं सर, मैं अभी गारंटी कोई नहीं देता. ओके, चलो बाय बाय. चलो आई एम एंडिंग द सेशन. मैं सेशन को एंड कर रहा हूं. बाय बाय.